Good morning. Today I would like to discuss the electric field due to a plus q and a minus q charge separated by a distance 2d. So the electric field lines will look something like this. A plus q charge, a minus q charge. Field lines will originate from positive charge and will terminate on negative charge. Now, the most important part is, since this is positive q and this is negative of q, that means magnitude of both the charges are same. So, if I divide the whole space into two equal parts by drawing a line in the middle, so now I have divided the whole space into two parts. There is a right hand side part because of negative q charge, and there is a left hand side part because of positive q charge. Now let us discuss what happens at this particular plane. What is this plane all about? Let's discuss this plane. What is this plane? The very first property of the electric field line at this plane is the field lines are perpendicular to this plane. This can be proved very easily. How come? See for example, what I do is, let us assume that this was the plane and the lines are not perpendicular. That means if they are not perpendicular, they are at some angle other than 90 degree. So if they are at some angle other than 90 degree, then this part cannot be symmetric to this part. This part can be symmetric to this part if and only if the lines are perpendicular to this particular plane. So we can see the lines are cutting this plane, electric field lines are cutting this plane perpendicularly. So electric field lines are cutting this plane perpendicular. Okay, good enough. So what is the next property? In this plane, whole plane, the electric potential is zero. The electric potential is zero. It's very easy to prove. Any point on this plane is equidistant from this plus q charge and minus q charge. So if this is a point P, electric potential at point P is equal to kq by, if this distance is r, so this distance is also r minus of kq by r is 0. So I can say this plane has zero potential. One more thing I would like to say. If I introduce an infinite conducting plane or sheet or plate here at this particular bisector, here if I place an infinite conducting sheet, plate or plane, the structure of field line will not change, because कंडक्टिंग प्लेट के लगाने से मेरी फील्ड लाइन को क्या फर्क पड़ने वाला था? वो कंडक्टिंग प्लेट की सरफेस को परपेंडिकुलर कट करने वाली थी, लेकिन ये वाली लाइन तो अभी हमने प्रूव किया पहले से ही परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. द थिंग इज, इतने से ये इतनी पतली थिकनेस के अंदर फील्ड लाइन जीरो हो जाएगी, लेकिन इफ वी अज्यूम द थिकनेस टू बी जीरो, देन देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस इन द फील्ड लाइन स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पर एक कंडक्टिंग प्लेट इंसर्ट करता हूँ तो. हाँ, अगर मैं इसके अलावा यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर किसी और पोजीशन पे या किसी और ओरिएंटेशन पे अगर कोई प्लेट कंडक्टिंग इंट्रोड्यूस करता हूँ, देन डेफिनेटली फील्ड लाइन स्ट्रक्चर विल चेंज. क्यों? फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर कट करने की कोशिश करेंगी. अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये तो परपेंडिकुलर है नहीं, ये वाला. अगर से मैं यहाँ पर एक प्लेन कंसिडर करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर एक प्लेन कंसिडर किया तो ये फील्ड लाइंस तो परपेंडिकुलर नहीं है, ये वाली फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, दे आर एट सम एंगल. सो इसका मतलब अगर यहाँ पर मैंने कंडक्टिंग प्लेन लगाया, एक कंडक्टिंग प्लेट लगाया, तो इसका मतलब ये फील्ड लाइंस
अपना स्ट्रक्चर चेंज करेंगी, क्योंकि अगर मैं कंडक्टिंग लगाऊंगा तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होने की कोशिश करेंगी, दे विल ट्राई टू चेंज सम स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई कंडक्टिंग प्लेट लगाता हूँ तो कोई फील्ड लाइन में स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसका यूज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स अ लॉट।